What's up, lovely people? What's up, lovely people? This is your very own Ban Alpha, and today we have come with a new vlog. And आज का vlog होगा उड़ान के ऊपर. So today we'll be unboxing the two best beasts possible. This is the DJI Mavic Mini. It has different characteristics. I'll be giving you all of that in a short span of time. This is the god of flying. This is the DJI Mavic 2 Zoom. Boy, I have no comments. Let's just quickly rush to the unboxing of this beast. What's up people, today would be the unboxing of a very own DJI Mavic 2 Zoom and इसके साथ हमने GoPro Hero 8 जो हमने last unboxing में दिखाया था, हम उसको भी इस्तेमाल करने वाले to get a pretty good close-up shots. With this we'll be using our very own DJI Osmo Pocket also for some pretty nice cinematic shots, and I'll be including and clubbing all of them and see how the video turns out to be. And इसके साथ हमारा एक surprise है. With this we have got one more thing, and I'll leave it for you guys to decide in the comment what that is, and let's start. Yes, आज कुछ कट जाता पर बच गया. I wish I can show you there, but yeah, you can seeing it from here. So switch completely. This is it. I'll give you a quick overview from that side, from that camera, and you can wait. So guys, this is the DJI Mavic 2 Zoom. This is the remote control, the charging slot, wires, attachments for lightning cable, type C. This is again for the remote control, some paperwork, propellers. This is the main drone which I already stated, and again the charging hub for the AC adapter. So guys, pretty much this is it. Pretty much this is the drone, and I'm really looking forward to just bite it on. So guys, this is the main drone. This is the DJI Mavic 2 Zoom. इसकी पर्ची निकाल दो क्योंकि हमें इसकी कोई requirement नहीं है. So give you a very quick overview. This is a lightning indicator which shows the percentage of battery remaining. These are the propellers where the propellers would be attached. This is the lower end. This is the gimbal protector which has been given by DJI Osmo only. Sorry, DJI. And these are the lateral landing signals. These are the lateral landing sensors. These are the lights. These again are the sensors. They have many sensors in this. This is the rear sensor. This is the front two sensors. So guys, this controller looks like this. पहले हम इसके ऊपर की पर्ची उतार देते हैं. This opens like this, and if you can notice जो हमारे इसके joysticks हैं, this time they have given here, so you can connect your joystick like this. Otherwise when the earlier models they had a issue कि ये ऐसे ही रहता था and was very difficult to carry the joystick along. This is the wire where you attach your phone cable directly to your mobile. It comes inbuilt, like आप यहाँ से directly इसमें यहाँ connect कर सकते हैं, and आपका जो भी mode है, अगर iPhone है तो यहाँ पे if you can see यहाँ लग जाएगा, and it's very handy to carry. These are the antennas, and ये आपका कैप्चर बटन है. दिस इज द रिकॉर्ड बटन. इट कंट्रोल्स द गिम्बल एक्सिस. दीज टू बटन कंट्रोल्स द गिम्बल एक्सिस. दिस रिमोट कंट्रोल गिव्स अ बैकअप ऑफ अराउंड 2.5 hours और सो, एंड 2.5 घंटे तक मतलब ये आपको पावर बैकअप दे सकता है. ये प्ले पॉज बटन है. दिस इज द SDM बटन. दिस इज बैक टू द होम ब्रांच. दिस इज द अगेन द पावर बटन. तो आई डोंट थिंक दिस इज चार्ज राइट नाउ, बट वील स्टिल सी. येस, बैटरी इज 23%, सो थोड़ा बहुत चार्ज आया है हमारे पास. So keeping this aside, having the main drone here. So this is the drone, and battery remove करने के लिए just click these two buttons and pull it on the upper side, like pull it out. This is how the battery goes out. Without battery it is very light. जैसे मैंने आपको बताया था, हमने अपना एक बैटरी चार्जिंग पे लगा रखा है, and since इसका flight time, it is giving a flight time of around 31 minutes, so
31 मिनट्स में तो कुछ नहीं हो सकता फिर गोइंग आउट फॉर अ गुड एडवेंचर समथिंग। तो उसके लिए हमने एक काम किया है, येस वी हैव बॉट द फ्लाई मोर कॉम्बो। अभी इसको उड़न तक्षरी को रखेंगे थोड़ा साइड पे। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ गाइस। एंटीनास, दीज आर द एंटीनास विच कैचेस द सिग्नल फ्रॉम द आरसी कंट्रोलर एंड दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। इसके ऊपर आपके प्रोपेलर्स लगेंगे, तो पहले प्रोपेलर्स लगा लेते हैं। सो गाइस दीज आर द प्रोपेलर्स, इन पे पूरा मेंशन कर रखा है कि कैसे डालना है और कैसे लॉक करना है। गाइस इसके चारों लग चुके हैं, but the thing very important about this drone is you have to have a knowledge about your area's drone laws. Like I'm in India, so I should have a good knowledge about how to fly these drones in India, because they have come up with new restrictions and other things which will hamper you flying in India. So this is how it looks like, and this is the remote controller which I saw. We'll do the unboxing of the Flymore combo, and आपको पता है Flymore combo या कोई भी प्रोडक्ट हमारे चैनल पे कहाँ से आता है। यस, दिस इज द फ्लाईमोर कॉम्बो। इसका जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। फॉर आवर ओन सेफ्टी लेट्स कीप इट बैक। कम्स विद अ बैग, वाओ। इसमें आप अपना सामान, मेमोरी कार्ड्स वगैरह इस पॉकेट में रख सकते हैं। दिस इज हाउ इट्स ओपन। हियर यू हैव सम एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स इन द फ्लाईमोर कॉम्बो। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम वापस रख देते हैं। साइड पे भी यू कैन कीप सम थिंग्स। इन्होंने वारंटी कार्ड वगैरह डाल के भेजा है, टैग्स एंड ऑल की किस में क्या आइटम आता है। लेट्स ओपन द कंप्लीट पैकेट। तो गाइस इसके अंदर से अभी निकल रहे हैं एक बॉक्स, जिसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट केसिंग एंड इट्स अटैच, इट शुड बी अटैचेबल केसिंग, बट इसके नीचे वी हैव वन and two. So we have like very important point for you guys. Whenever you're carrying a DJI Mavic 2 Zoom, make sure you have a lithium carrying battery case, and that will help you go across nations, because otherwise they have some issues with the batteries and they don't let you carry it along. 3850 mAh, and इसमें डबल क्लिक करने से वो उसका ऑपरेटर सिग्नल बता देगा, जो नहीं बता रहा, which means both of them are discharged. अब ये इसके लिए हमें फिर अपने औजार की जरूरत पड़ने वाली है, हमें लग रहा। दिस इज द कार चार्जर एंड दैट दिस इज द एडिशनल बैटरी चार्जर, जिसमें आप बैटरी अपना रख के इसको चार्ज कर सकते हैं। द एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर, एंड ये ऐसे करके खुलता है दोनों तरफ से। तो आप यहाँ पे दो बैटरीज एंड यहाँ पे दो बैटरीज, सो यू कैन साइमल्टेनियसली चार्ज 4 बैटरीज लाइक दिस। तो 2 बैटरी ऐसे आप डायरेक्टली कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, एंड इन एडिशन टू दिस यू कैन चार्ज अदर थिंग्स ऑल्सो विद इट। सो गाइस अभी हम अपनी जल्दी से बैटरी चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत इधर ही उड़ के दिखाते हैं कि कैसे उड़ता है। इसकी में अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रेंज एक्सटेंडर, ये ऐसे खुलता है। दिस इज द कंट्रोलर, कंट्रोल के ऊपर इट इज प्लेस लाइक दिस। दिस इज हाउ इट इज प्लेस ऑन द कंट्रोल, एंड it really does extend the range. You can watch in the subsequent video how much is the range of this video, what is the height the Mavic Zoom 2 can fly. Once we get a good ground to fly it off, we can't take it out and fly, but I'll still be doing a small. Forgot to tell you guys, this Mavic 2 Zoom can fly up to 72 kilometers per hour. 72 kilometers per hour.
It has a omnidirectional sensor itself. It has a 28 to 48 mm zoom, which is the best thing. You can use it for surveillance also. I might take it out soon for a couple of adventures. I'm planning one in March with my very dear friend Ravi, Iman, Navneet also, but I kind of doubt that he'll show up. But so guys, अभी हम जाने वाले अपना drone को उड़ाने and we have a new cameraman today. Please introduce yourself. Hi, I'm Dr. Amish and I'm Sir's cameraman because apparently that's what MBBS people do these days. Yeah. They record. और वैसे भी इसका प्रोपेलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे ऑपरेशन कर सकता है. सो गाइज अभी हम इसकी बैटरी लेके बैटरी को प्लेस कर रहे हैं. बैटरी इज प्लेस, विल टेक द सेंसर कवर एंड वाओ गाइज ये ऐसा छोटा सा बच्चा सा है जिसको तुम गोद में लेके घूम सकते हो. And the controller is also completely charged right now. You can fly this drone with the help of a DJI Go app, which I've already installed on my iPhone. So we'll connect the iPhone. As you can see, because of the sensor, it is not coming close to me, no matter how much I try. So guys, now we are ready to fly this thing and here we go. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल दिख रही है, जिसका ओवरव्यू मैं आपको बाद में दूंगा. एंड सामने वहाँ पे ये रहा ड्रोन उड़ता और वो हमारे संवाददाता